French media even running a cover story, one magazine entitled The Suicide of America. The magazine, quote, blamed America's retreat from Afghanistan on, quote, a woke dictatorship and questioned whether the American empire is collapsing. Hello guys and welcome back to Sententia. और आज हम जो बात करने वाले हैं वो एक फ्रेंच मैगजीन में छपी हुई एक रिपोर्ट है जिसमें उसने कहा है अमेरिका अपना वोक कल्चर जो है वो फ्रांस में एक्सपोर्ट ना करे। अब ये वोक कल्चर क्या होता है, कैसे अमेरिका इसको दूसरे कंट्रियों में एक्सपोर्ट करता है और कौन कौन से ऐसी मैगजीन्स हैं जो एक्चुअली अमेरिका का माउथपीस बन जाती हैं इस वोक कल्चर को एक्सपोर्ट करने के लिए, और अमेरिका एक्चुअली ऐसा करता क्यों है, इस सब के बारे में हम बात करेंगे वीडियो के एंड में। फिलहाल आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। All right, on to this story as well. Secretary of State Antony Blinken will travel to Paris this week in an attempt to patch up America's strained relationship with France. This comes amid criticism over our country's submarine deal with Australia and the controversial U.S. withdrawal from Afghanistan. French media even running a cover story, one magazine entitled The Suicide of America. The magazine, quote, blamed America's retreat from Afghanistan on, quote, a woke dictatorship and questioned whether the American empire is collapsing. Here to react, former member of European Parliament, Nigel Farage, and our friend Nigel. So great to see you. We're not used to seeing France critiquing our culture. They are quite robustly right now. What do you make of this? Is America exporting woke politics across the pond? And are they right? Good morning. Well, of course, the French are always quite critical of the Americans in the sense that they can never forgive you for saving them in World War II. It's an odd piece of Gallic psychology, quite why Omaha Beach isn't celebrated by them, I just don't know. So it's not easy. Now, look, to begin with, the submarine deal, which has been struck by the USA, the UK with Australia, that is to give Australia 21st century submarines with nuclear reactors in the back, not the diesel ones the French wanted to give. So they're a little bit sore. However, when it comes to the point about wokery and about cancel culture, yes, I'm afraid this stuff was invented in the USA and it is being exported to Western Europe. And the further criticism about, they're asking a question, is this the end of the American empire? Let's be frank about this. Biden's calamitous withdrawal from Afghanistan has removed America from the world stage, and with that, much respect that people had for the countries. And I think on that point, on those last 2 points, the French actually have got something quite serious to say. So I think I'm missing it too. You're saying the reverberating effect of what happened in Afghanistan has shaken our allies to the core. This whole belief that America will see things through, will be there. Yes. They said Donald Trump was going to blow up our alliances. Did it turn out Joe Biden did instead? Well, isn't that the point? Trump rightly said, why have we been there for 20 years? But Trump would never have left unless a proper deal had been struck between the Afghan army and the Taliban. That wasn't in place. So, yes, you're quite right. It was Donald Trump that was going to ruin NATO. It was Donald Trump that was going to make America isolationist. He did the opposite. Actually, he was out there campaigning for peace, and I think the Abraham Accords and the fact that he visited, he crossed the line, and went into North Korea shows you that, he wasn't a warmonger president, but he was trying, in foreign policy terms, to do some good things with American power. And it's now Biden that has unilaterally withdrawn, not just from Afghanistan, but frankly, from the world. And I say this to you on the morning when we've learned that there was a very large incursion of communist Chinese jets over Taiwan yesterday. Yes. तो गाइस, आपने देखा इस वीडियो में कि कैसे फ्रांस ने और फ्रेंच मीडिया ने अमेरिका के ऊपर एक तरीके से हमला बोला है कि आप हमारे यहाँ वो कल्चर को एक्सपोर्ट ना करें। अब सवाल ये उठता है कि वो कल्चर होता क्या है। कुछ लोग इसको ये कहते हैं कि जो लेफ्ट लिबरल माइंडसेट है यही अमेरिका में और दूसरी जगहों में वो कल्चर कहलाता है। अब बात यह है, क्या ये इंडिया में भी है? जी हाँ, ये इंडिया में भी मौजूद है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे अपने चारों ओर कुछ मैगजीन्स को, कुछ मीडिया आउटलेट्स को, वो पूरी तरीके से अमेरिकन वोक कल्चर को इंडिया में इंपोर्ट करने का काम करते हैं। आप अगर ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि कई ऐसी मैगजीन्स, कई ऐसे आउटलेट्स हैं जो पे इंडिया में अमेरिका का वोक कल्चर लाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि कुछ इंटेलेक्चुअल, कुछ बुद्धिजीवी जो अक्सर अमेरिका के जो वोक मीडिया आउटलेट्स हैं वहां पे
या फिर आर्टिकल लिखते हुए या फिर ओपिनियन पोस्ट लिखते हुए अक्सर आपको दिख जाएंगे। तो आपके हिसाब से कौन कौन अमेरिका की मदद कर रहा है वो कल्चर इंडिया में लाने के लिए, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और उसके अलावा आपके हिसाब से इंडिया में कौन कौन से वोक मीडिया आउटलेट्स हैं उसके बारे में भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हमारा जल्द एक अगला वीडियो इस टॉपिक पे और आने वाला है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि वो जो हमारा अगला वीडियो है वो जैसे ही आता है वैसे ही आपको तुरंत उसके बारे में पता चल जाए। तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।